पावर, पिज्जा और पेट्रोल, राइट? तो इन तीनों में आपका क्या रोल है? आप क्या करते हैं इन तीनों के लिए? सो वी आर नाउ एंटरिंग इनटू एन एरा, डोंट बी सरप्राइज कि अगर आपकी मेट्रो रुक गई, इट्स अ साइबर अटैक। आपके घर में पानी आना बंद हो गया, इट्स अ साइबर अटैक। AI probably will have more capabilities to give us more threats. And secondly, you will for sure use AI to provide services to the customers. So, do you have any opinion on how things are evolving in the AI space with respect to cybersecurity? He was actually hitting the whole media cell of this Indian gang of Indian Mujahideen. Oh my So God. How will you structure the organization to combat very that risk? Number one. Number two, business concentrated risk, जो typically होते हैं ना कि भाई मेरे बड़े क्लाइंट से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है या इसी जोग्राफी से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, अगर वो है, अभी मुझे नहीं पता, आई हैव नॉट सीन योर नंबर्स येट, बट अगर वो है तो उसको हम कैसे कॉम्बैट कर रहे हैं फ्यूचर में? हेलो, नमस्कार। आज एक स्पेशल फेस टू फेस मैंने रिकॉर्ड किया है और आपको मिलेगा ये फेस टू फेस। पता ना, रोंगटे खड़े हो गए, मज़ा आ गया। इट वॉज सच ए एनरिचिंग नॉलेजेबल फेस टू फेस अबाउट दिस पर्सन। ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर। इनकी कंपनी IPO लेके आ रही है और बड़ी बात यह है कि जिस डोमेन के अंदर में ये काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत ही रेलेवेंट डोमेन है और ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ वेरियस थिंग्स इन इंडिया, जो कि आप वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। नेम ऑफ द पर्सन इज़ सनी और इनकी कंपनी का नाम है टेक डिफेंस लैब। ये वीडियो देखिएगा लास्ट तक, बहुत सीखने को मिलेगा। और मेरा कोई इनके साथ कमर्शियल अरेंजमेंट नहीं है, मैंने कोई पैसा नहीं लिए हैं, तो ये डिस्क्लेमर इस्टेब्लिश होता है। मुझे पसंद आया, ये मुझे इनके अप्रोच पसंद आया, तो मैंने अप्रोच किया और वेरी हैप्पी दैट ही एग्रीड टू डू दिस फेस टू फेस विद। तो आप देखिएगा ज़रूर, मज़ा आएगा। लेट्स कॉल सनी। हेलो हेलो सनी। मैं ना बहुत दिन से सोच रहा था कि यार ये जो साइबर सिक्योरिटी और इस तरह का जो टॉपिक है ना, इसके लिए मुझे कोई रॉकस्टार चाहिए जिससे बातें कर सकता हूँ। एंड द मोर आई एम डूइंग होमवर्क अबाउट यू ऑन इंटरनेट, मुझे लग रहा है यार, what an opportunity to talk to Sunny about this emerging industry, cyber security. Welcome to this podcast, Sunny. thank you, Vivek, and I can only say that you are a rock star of the capital market as well. Oh, so sweet of you. Thank you so much for those kind words. Sunny bhai, sorry, I'm going to use bhai साथ में because it comes naturally, so I hope you won't mind. So you're going to cut this, right, in between? No, no, no. I'm going to keep it because All it's right. going to be a very brotherly conversation. Okay. ये एक्चुअली पता है, ये टॉपिक है ना साइबर सिक्योरिटी, इस पे एक सुनते ना भय आ जाता है। टेल मी वन थिंग, यू आर वेयरिंग ब्लैक ड्रेस, is there any relationship between the color of the shirt and the job you are into? So, I mean, if you, so the one thing is this black color gives me an energy. I don't know, like hacking gives me a push since when I was in my 9th grade. तब से जब से पहली बार मैंने hacking का word सुना, it is actually giving me a push. Same black color gives me an energy. The second thing is, I always feel that, if you stick to one color, there's, lesser confusion in your life and you focus on your purpose and you focus on your passion as well, right? So when you go to a shopping, you just, take one color and, you're all okay with that, right? So when anybody opens my wardrobe, only find black color. But yes, there is a connection to it as well. Okay. If you look at the hacker, or if you have looked at the hacker sitting somewhere in the garage, a 16-year-old guy, working in the dark night and, wearing a hoodie. Surprisingly, आज मेरे पास hoodie नहीं है, right? But it always has a black color. So yes, it has a connection with the hacking as well. Wow, my guess is pretty much okay. Sunny, we have been using the word hacker, and obviously your main work is cybersecurity. So can I presume that आपने career चालू किया था एकदम pre-college teens में as a hacker? But that's how the progression is for most of the people, right? एब्सोल्युटली। सो मेरा स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है विवेक। मतलब मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था, वेरी फाइन मॉर्निंग आई वोक अप एंड वन मेल वाज इन माय ईमेल बॉक्स विद द कस्टमर के डिपार्टमेंट ऑफ yahoo.com। अच्छा। लिखा था अपना पासवर्ड दो
otherwise your email will be blocked in next 48 hours. Wow. So I gave my password, and second I could not able to open the email. I tried. My ID got logged for 24 hours, and then I ended up calling my friend saying that, yeah, yesterday I gave my password on the customer care's, following the customer care's emails instructions. I'm not able to open, my email account. And that time he actually gave me this word known as hacking. Sunny, you are a victim of hacking, and somebody has done a phishing, with you. Okay. Surprisingly, पहली बार पता चला कि फिशिंग खाली सी पे नहीं, इंटरनेट पे भी होता है. मैंने बोला यार मुझे भी फिशिंग सीखना है, मुझे भी किसी के लड़की का आईडी हैक करना है, किसी का आईडी हैक करना है, मुझे बताओ ना मुझे हैकिंग कैसे सीखना है. That was a curiosity, and that was curiosity that was not making me sleep the whole night. I was working for 12 hours 16 hours, अपने रूम में काम करते रहो, देखते रहो कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है, कोई कम्युनिटी है कि नहीं है. सरप्राइजिंगली कोई कम्युनिटी नहीं थी. मैंने अपनी खुद की कम्युनिटीज भी क्रिएट की. And then that's how my teenage age and my age I started learning hacking. But interestingly बहुत ही अच्छा सा क्या था कि जब मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आया तो सबको एक सेमिनार देना था, मुझे भी एक सेमिनार देना था. तो सब लोगों ने, बिकॉज आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड, सो सब लोगों ने ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स का सेमिनार देना चालू किया. मुझे मैडम ने पूछा कौन सा टॉपिक लेना है. सर मैडम कंप्यूटर हैकिंग. सो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि मेरे सेमिनार में कुछ हैकिंग वैकिंग दिखाएगा, ब्लैक स्क्रीन दिखाएगा, ग्रीन कलर के फॉन्ट होंगे, ऊपर से नीचे जाते होंगे और उसके बाद बड़ा सा मैसेज आएगा इट इज हैक्ड. तो मुझे एक्सपेक्टेशंस भी पूरी करनी थी. तो हैकिंग तो मुझे आ गया था, फिशिंग आ गया था. तो मैंने क्या किया, मैंने 15 दिन पहले अपने जितने भी सहभागी है, आई हैव सेंड to all the students of EC branch, around 120 people, and you'll be surprised that almost 40 people have given me ID password. Oh my God! कॉलेज में जितने भी लोग ज्यादा एटीट्यूड दिखाते थे, वो सेमिनार में तो बहुत था, पूरा पैक्ड हॉल था. बिकॉज मैंने बोला था डोंट फॉरगेट टू कम इन द सेमिनार, बिकॉज आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग व्हिच वी एन आई ओपन फॉर एवरीवन. सब लोग बैठे थे, जो लोग ज्यादा एटीट्यूड दिखाते थे. मैंने बोला यार कैन यू गिव योर ईमेल आईडी. क्वेश्चन था कि मेरे पास तो पासवर्ड ऑलरेडी आ चुका था, 15 दिन हो गए थे. ह्यूमन का एक टेंडेंसी होता है कि भूल जाते कि कहीं पे पासवर्ड दे दिया था. तो मजे वाली बात क्या थी कि मुझे कुछ दिखाना था, हैकिंग कैसे दिखाऊं. मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, ब्लैक स्क्रीन, फॉन्ट का कलर ग्रीन कर दिया, कमांड एकदम लिखता गया, क्योंकि हमने मूवी में देखा है ना, हैकर एकदम रात को काम करते, कमांड लिखते जाते, और उसके बाद में आता है एक्सेस ग्रांटेड, एक्सेस ओपन. वो एक इंटरनल बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग होता है. तो 15 मिनट 20 मिनट तक लिखा गया. मैंने बोला इनकी पेशेंस चेक करता हूँ, हाउ मच पेशेंस दे हैव. And 15 minutes के बाद the guy said, Sunny, if you're not able to do it, Sunny, stop this. I said, no problem. I got the password. So I write a command to authenticate to Yahoo, mail ID. And surprisingly, password तो मेरे पास था ही. तो मैंने right password लिख दिया and got authentication successful. सीधा command prompt बंद किया, browser open किया, write mail.yahoo.com, ID password, and I entered. And he was like, Sunny, stop, don't get into my mailbox, because there's certain emails that he doesn't want me to publish as well. Yeah. So that's how the journey started. And interestingly क्या हुआ कि मेरा नाम जो था वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में चेंज हो गया, एंड दैट इज सनी वाघेला टू समबडी नोन एज सनी हैकर. एंड जब हैकर लास्ट नेम मिलता है ना, nobody looks at the director or a principal of the college, but everybody looked at the hacker of the college. The girls come and say that, Sunny, can I have a lunch with you? मैं बोला यार आज तो फोकट का लंच मिल रहा है. But later they asked, Sunny, can you help me get some guy's password? Can you help me get this girl's password? So you've been treated, as a celebrity in that college. So that's how my life started, Vivek, in the the hacking vertical. Superb, yeah. What exciting things you have done in the initial phase of your life. वहीं से ही वो कहते हैं ना कि वो बचपन में पता लग जाता है कि दूध के दूध कहाँ तक है. तो समझ में आ गया था कि आप कहाँ जा रहे हैं. तो अपने बिकॉज आई हैव अराउंड 60 मिनट्स विथ यू, एंड व्हाट आई थॉट कि स्ट्रक्चर कर लेते हैं डिस्कशन को, कि आपके बारे में तो जानना ही है बिकॉज यू आर देयर ऑन इंटरनेट, सो वी लव टू मोर अबाउट यू ऑल्सो.
साथ में ये जो इंडस्ट्री है, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री, ये क्या है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया में इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इंडिया में अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? आज भी गलतियाँ तो वही कर रहे हैं हम, एसएमएस आ रहा है और उसमें हम क्लिक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम हैक्ड हो रहे हैं। तो इसके बारे में समझेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपना आईपीओ भी लेके आ रहे हैं एंड यू आर रेजिंग मनी टू ग्रो। सो दिस इज वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू नो दैट समवन लाइक यू, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, क्रिएटिंग अ अमेजिंग वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर अदर स्टेक होल्डर्स। तो उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल थ्री थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर जर्नी। पूरा एकदम अभी तक तो हमने चालू कर लिया, पूरा लेके चलिए, कहाँ अभी आप कैसे इंटरेस्टिंग पहुंचे? क्या था कि जब ये सेमिनार दिया, सब सनी हैकर का टाइटल मिल गया, हाँ। पीपल वर लुकिंग एट डिफरेंटली टू मी। बट एक ह्यूमन का टेंडेंसी होता है कि सेकंड सेमेस्टर आते आते यू बीन ट्रीटेड नॉर्मली कि ठीक है, ये हैकर होगा। तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था यार कुछ करना है, दैट आई वांट टू लुक अपार्ट, आई वांट टू पीपल शुड ट्रीट मी डिफरेंटली बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट दैट सेलिब्रिटी वाला फीलिंग अवे फ्रॉम यू। हम्म। So that time where people were, seeing the facilities in any of the technologies, I was actually seeing the flaws in the technologies. तो सबके हाथ में नए नए मोबाइल फोन्स आए थे 2004 में, रिलायंस कम्युनिकेशंस के, एंड लॉट ऑफ अदर यू कैन से दैट टेलीकॉम ऑपरेटर्स वर देयर। बट मोबाइल बहुत ही नया चीज था, मतलब एवरीवन स्टार्टेड यूजिंग इट, कॉल्स करना, एसएमएस करना। आई वाज वर्किंग एंड मैंने एसएमएस के अंदर ना एक बहुत ही अच्छा सा लूप होल ढूंढा, दैट the message packets which are going from the phone to you can say that the tower, ये जहां पे कोई चेक्स या तो कहाँ पे कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं थी। इंटरेस्टिंगली क्या किया कि उसमें मैंने थोड़ा जुगाड़ किया, हैक किया, उसके बाद में उसको चेंज किया, एंड आई वाज एबल टू सेंड एन एसएमएस फ्रॉम एनी नंबर टू एनी नंबर। यानी कि मैं किसी का भी नंबर से किसी को भी एसएमएस कर सकता था। तो आपने हैक क्या किया था सनी? So it was the problem in the protocol of this communication, which was already there. So while you are sending something, it goes to the the nearby tower. मैं layman की language बता रहा हूँ. I don't want to go to so much of technicalities of it. तो मैं किसी के भी नंबर से किसी को एसएमएस करता था। तो मैं क्या करता था कि अपनी कॉलेज में मैसेज कर देता कि यार आज जो हमारे बोलते हैं ना कि कोई कॉलेज में एक प्रोफेसर होता है जो बहुत खड़ूस होता है, नहीं नहीं यार इनका लेक्चर तो अटेंड ही नहीं करना है, तो बोलता है कि उनके नंबर से एसएमएस कर देते थे। और उस टाइम पे ना एसएमएस के पैक्स आते थे, 2,000 एसएमएस फ्री, 1,000 एसएमएस फ्री, लोग 30-30 रुपए के वो पैक्स सब्सक्राइब करते थे। मैंने क्या किया, सबको मैसेज कर दिया कि आज हमारा लेक्चर कैंसिल है। लोग क्या करते, कैंटीन में चले जाते, लोग कहीं और चले जाते। सो आई वाज एक्चुअली डूइंग दैट, मैं किसी और लड़की से नंबर से किसी को मैसेज करता कि तेरा बॉयफ्रेंड डिच कर रहा है, तो बोल दे ऐसा ना करे। तो दैट्स हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड। बट मेरे लाइफ का एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न आया कि बाय द वे हैकर्स गेमर्स बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब आई यूज्ड टू प्ले सो मेनी गेम्स इन माय लाइफ। अच्छा। सो एंड मैं गेमिंग में बहुत ज्यादा मेरे इंटरेस्ट रहा था, बिकॉज वो क्रिएटिविटी बहुत इंटरेस्टिंग आती है, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आती है। मैं बैठा था, गेम खेल रहा था, साइबर कैफेज होते थे उस टाइम पे, मॉडर्न साइबर कैफेज। तो एक रिपोर्टर आए और मैं ये किसी के नंबर से एसएमएस कर रहा था, किसी को मदद कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने के लिए। आके मेरे को बोलता है कि यार ये क्या चल रहा है, आप लोग थोड़ा कम आवाज करो, आई एम वर्किंग ऑन द लैपटॉप। मैं बोला सर जी कैन आई शो यू समथिंग? बोले। तो मैंने उनको अपने नंबर से मैसेज करके 2-3 वर्ड लिख दिए। तो मैं बोला आपका नंबर दो। तो बोले नंबर क्यों दूं? दो ना नंबर। तो उनके ही नंबर से उनको 2 ऐसे वर्ड लिखे कि वो एकदम खड़े हो गए, ये क्या किया तूने? तो मैंने बोला ऐसा। तो बोले यार मैं ये टीवी से हूँ, आज तू क्या कर रहा है? मैंने बोला को कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम गोइंग बैक होम फ्रॉम हियर, आई फिनिश माय कॉलेज, केम हियर फॉर गेमिंग एंड गोइंग बैक होम। बोले मैं आ रहा हूँ। शाम को वो आए, यू बी सरप्राइज, बड़ा सा लाइव वान लेके आए और बोले यार लाइव करना है। Oh my God. इसके साथ करना है? बोले रजत शर्मा के साथ करना है। एंड आई वाज लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि यार मैं जिसको आपकी अदालत उस टाइम पे अभी भी फेमस है, उस टाइम पे इट हैज अ डिफरेंट चार्म ऑल टुगेदर। यार उनके साथ लाइव करना है मतलब। तो मैंने तो एकदम ब्लेजर पहन लिया, नहीं नहीं सर लाइव करना है तो लाइव करेंगे करेंगे। अरे नहीं नहीं यार यू आर अ किड, यू जस्ट वियर द टी शर्ट्स एंड ऑल। लाइक ठीक है चलो, मैंने लाइव किया। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ वाज कि यार इट्स नॉट अबाउट गोइंग लाइव। कल मैं कॉलेज में जाऊंगा तो हाउ द पीपल आर गोइंग टू ट्रीट मी, तो जैसे कॉलेज में गया, अरे सनी कल तेरा प्रोग्राम देखा, अरे सनी तेरा कल ये देखा। सो दैट्स हाउ
यू नो आई ऑलवेज यूज टू गेट दैट क्यूरियोसिटी. जैसे सेकेंड ईयर मेरा खत्म हुआ, थर्ड ईयर में मैंने आई वाज कॉलिंग समवन यूजिंग अ VoIP टेक्नोलॉजी, लाइक इंटरनेट टेलीफोन जो हम व्हाट्सएप करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ इंटरनेट टेलीफोनी. दैट इज नोन एज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो उसका यूज करके मैं यूएस में कॉल कर रहा था टू माई सिस्टर. When I was actually calling her, नंबर आ रहा था 301401. तो मेरे माइंड में आया कि यार मैं नंबर को चेंज करके किसी का भी नंबर डाल सकता हूँ. तो देन आई ब्रेक इनटू द सॉफ्टवेयर, ब्रेक इनटू दैट सर्वर, बिकॉज उस टाइम पे ट्रस्ट मी विवेक, सिक्योरिटी वाज अ मिथ. मतलब जो वेबसाइट बोलो उसमें प्रॉब्लम, जो सर्वर बोलो उसमें कोई ना कोई पैचेस होते थे, कोई ना कोई वनरेबिलिटीज होती थी. देयर आर नो पैचेस अप्लाइड इनटू इट एंड बहुत सारे प्रॉब्लम थे. तो मैंने सोचा कि नहीं यार, इसको हैक किया जाए. हैक करने के बाद आई वाज लाइक, वी कॉल इट अ रिवर्स इंजीनियरिंग. सो आई रिवर्स इंजीनियर द सॉफ्टवेयर एंड नंबर चेंज किया. एंड सरप्राइजिंगली दैट वाज अ गेम चेंजर. क्योंकि I was able to make calls from any number to any number. That means I don't require a phone. I can make a call using your number. अब इसका क्या क्या यूज हो सकता है. तो लोग क्या सोचते हैं यार, अब जो मैं सोच रहा था आफ्टर माय फर्स्ट इंटरव्यू, कि यार ये तो किसी का झगड़ा कराने के लिए, कोई फिरौती मांगने के लिए इसका यूज हो सकता है. नाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. आई कॉल्ड अप 2-3 मीडिया फ्रेंड्स एंड से दैट देखो यार, कल ना मनमोहन सिंह मुशर्रफ जी को कॉल करेंगे और बोलेंगे कि भाई मैं पाकिस्तान पे अटैक कर रहा हूँ, आपसे जो होता है काट लो. एंड दैट वाज लाइक, यू नो, बोले ऐसा हो सकता है. मैंने बोला वेट, cut the call, I'll give you a call from your number. And I was so surprised. And then again, the media guys have supported. Interestingly, the best part is that they got, you know, the telecom minister over the program. और मेरे को बोले आप उनको चैलेंज करो. मैंने बोला कैसे, मैं तो 18 साल का बंदा हूँ, मैं टेलीकॉम मिनिस्टर को चैलेंज करूँ. बोले आप चैलेंज करो. मैंने बोला नहीं ठीक है. तो मैंने टेक्निकली बोलना चालू किया, नहीं सर, इंडिया में कोई ऐसे सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है, आतंकवादी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ये करना चाहिए. एंड देन इवेंचुअली यू नो गेट टू मीट देम एज वेल. सो द बेस्ट पार्ट वाज ऑल अबाउट, you know, what I was thinking from a normal perspective, you know, with this all flaws and with the support of media and with the support of things, I started thinking security from a holistic perspective. कि यार इसका holistic perspective से अगर सोचो तो it can be misused, it can be used for committing crimes, it can be used for committing, you know, the dangerous crime that you can't even imagine it. Right? If you use any celebrity's number, everything. So, you know, couple of, you know, people have come on the, you know, those programs and, but best part मेरे लिए तो अच्छा ही की था. यार कल सुबह कॉलेज में जाएंगे, right? और कल सुबह कॉलेज में इतना सही से होता है. You going into a college and, you know, you get a standing ovation. सनी, well done, कल आपको हमने देखा था, आपने ये किया, आपने वो किया, इस तरह से किया. And I was like, wow. And that actually motivates me to do something new, right? Absolutely. ये सेमेस्टर खत्म हो जाता है एंड सोशल नेटवर्किंग का जमाने का प्रारंभ होता है. I would say that it was a starting of a social networks, and the first social networking website was Orkut, launched in 2005. इंडिया में 2005 में आया. I was using it. तो मैंने सोचा यार सनी देख, अब तो एक ही है, कुछ भी करना होगा. एंड इफ यू रियली वांट टू, यू नो, बिकम अ नेशनल फिगर, राइट, यू नीड टू फाइंड प्रॉब्लम्स इन ऑर्कुट. तो अगर ऑर्कुट में अगर कुछ ढूंढना आपने, तो यू नो यू विल हैव अ विन. And I was spending days and nights to find out problems, and I found 2 vulnerabilities, which is session hijacking and cross-site scripting. जिसको अच्छे शब्दों में बोल रहा हूँ तो आप किसी का भी अकाउंट, उसके आईडी पासवर्ड बिना भी उसका सेशन हाईजैक कर सकते हो. यानी मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उसमें शायद आपको याद होगा तो स्क्रैप्स आते थे. आपको स्क्रैप में मैसेज करूँ, आप उसमें लिंक आता, अब जैसे ही ओपन करूंगा विवेक जी का अकाउंट पूरा का पूरा मेरे पास आ जाएगा. And I was like, wow. I reported to Google. I reported to, because it was owned by Google. It was recently acquired by Google in 2006. Showed no response, showed on a couple of media articles that it can be hacked, it can be misused, it can be these things. सरप्राइजिंग फैक्टर ये था कि उस टाइम पे मेरी कॉलेज में एक केस हुआ, where some guy has uploaded an MMS of a girl by creating a fake account on Orkut, and local police उसको investigate करने हमारी कॉलेज में, because it was a video that was published of a girl
and the thing is that time because Google were not having any presence in India, even removing a profile from Orkut was a big challenge. It was finding very difficulty to get that thing. तो पुलिस वालों ने बोला यार आपके यहाँ पे तो एक बंदा पढ़ रहा है जिसको हमने कहीं पे देखा था यार, वो तो ऑर्कुट हैक कर सकता है, तो उसको बोलो हैक करके इसको वीडियो को हटा दे। क्या बात है। बोला नहीं नहीं यार ऐसा तो मैं नहीं कर सकता बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर दैट आई हैव गिवन इट टू गूगल, आई कैन नॉट डू दैट। व्हाट आई कैन हेल्प यू आउट इज आई कैन हेल्प यू आउट टू ट्रेस दैट पर्सन। मैंने वो बंदे को ट्रेस करके दिया, मतलब 1 घंटे के अंदर उसको आईपी एड्रेस से लोकेशन मिल गया। And finally that guy got arrested. The police people were like, सनी तुम 1 घंटे के अंदर एक केस ट्रेस कर सकते हो? यार हमारे पास ना 100 के ऊपर केसेस वहां पे क्राइम ब्रांच में पड़े, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मैंने बोला देखो सर आई कैन हेल्प यू आउट बट ओनली प्रॉब्लम इज सर यू नो आई कम इन माई कॉलेज बस। बोले नो प्रॉब्लम, कल से तुम्हारी कार आ जाएगी, कल तुम 2 बजे से क्राइम ब्रांच आना चालू कर दोगे। तो मैं सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मेरी कॉलेज में जाता था और मेरी अटेंडेंस था 90%, मतलब किसी को एग्जाम्शन नहीं मिलता था। बट मेरे वाइस चांसलर, मेरे जो निर्मा यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर थे उस टाइम पे, दे सपोर्टेड मी अ लॉट कि बोले इस बंदे को जाने दो बिकॉज यू नो इस बंदे के आर्टिकल हमारे सारे नोटिस बोर्ड पे लगते हैं, हर वीक कुछ ना कुछ करता है, हर वीक कुछ ना कुछ आता है एंड वो लोग को भी बहुत ही प्राउड फील होता है। तो मैं 2 बजे से क्राइम ब्रांच जाता था और आप वहां पे जाओ, आपने केसेस सॉल्व किए। मेरे लास्ट ईयर में मुझे बोला गया कैन यू सेट अप अ साइबर सेल? I was like, show me where I want to set up a cyber cell. You've been taken to a bungalow which is in the IPS area and said ये बंगलो है। मैंने बोला यार ये बंगलो तो मतलब खंडेर जैसा लग रहा है, इसको मैं साइबर सेल कैसे बनाऊं? अरे बोले सब रिनोवेट करवा देंगे। तो I mean, I've been given opportunity to set up 4 computers, मतलब 4 कंप्यूटर का साइबर सेल हुआ करता था। Now it is the Ahmedabad cyber cell is second largest in or the Gujarat cyber cell is the second largest in the country. Wow. So ये particular चीज in 2006 I've been given the so मैं हमेशा क्या मानता हूँ ना कि life always takes its own path, but and opportunities are lying everywhere, right? Because many a times when I discuss the story, people are always saying सनी तेरे को opportunity मिला था, you've been lucky. मैं मानता हूँ everyone is lucky, right? Opportunities are there in अभी तो इंडिया में ecosystem is prevailing. If you want to start a startup, if you want to do some business, right, a lot of money is coming to India, a lot of support is actually given by the government and all, but what is missing is people are not seeing that as an opportunity and people need to grab that opportunity. So I always feel that you grab the opportunity. Second, मैंने क्या किया कि मैं हमेशा एक ही चीज में मानता हूँ कि imagination is more powerful than the knowledge, right? Or I always believe in my life and I'm a hardcore believer of manifestation in my life. So when I look at the technology, when I look at things, I always manifest यार इसका use करके अगर मैंने ये कर दिया and the best part is that you get into that phase of imagination or manifestation like a monk कि मुझे अभी भी प्रॉब्लम होता है, let me tell you very frankly, मतलब मैं 1-1, 2-2 घंटा ऐसे बैठ जाता हूँ and my wife is like what are you doing man, right? वो तो मतलब and then my wife sometimes, मेरे तो जब शादी हुई थी तब बोलती यार you have a double personality एकदम ये कुछ अपने मेडिटेशन के मोड में चला जाता है और एकदम बैठा रहता है, आजू बाजू वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट व्हेन आई गेट टू मीट पीपल, व्हेन आई गेट टू इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे जैसा पागल एक नहीं, मेरे जैसे पागल बहुत सारे दुनिया में। सो आई एम नॉट ओनली द वन पर्सन इन दिस द होल ऑफ द वर्ल्ड एंड आई बिलीव what you're passionate about, right? I mean, you always get crazy when you think about something in your domain, in your thing. So imagination is more powerful than the knowledge. So I mean, knowledge can be outsourced, right? But what makes a leader is what an imagination, a manifestation, and get to that feeling that yes boss ये हो चुका है। and trust me, मैंने जो चीज भी किया था कि ऑर्कुट का प्रॉब्लम ढूंढा या ऑर्कुट का ये चीज ढूंढा, सबसे पहले मुझे ये था नहीं यार ये अचीवमेंट तो मेरे नाम पे ही होगा, राइट? सो बस ऐसे करते करते मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो गया। जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ 2008 में, मैं कॉलेज वालों ने बोला डिग्री लेने आओ। डिग्री लेने का मेरा कोई मन नहीं था बिकॉज अगर मैं डिग्री लेता तो मेरे हाथ में 2 जॉब ऑफर्स थी, राइट? तो एक मेरी कोर वर्टिकल में थी, एक आईटी में थी। तो मैं डिग्री लेने नहीं जाता था बिकॉज माई मदर वांटेड मी टू
जॉब इन कॉग्निजेंट एंड एक्सेंचर, जहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ था। अच्छा। माय फादर, मेरे पापा के फोर्स से मैंने लास्ट ईयर में जीआरई दे दिया था कि नहीं नहीं बेटा तू यूएस चला जा, राइट। एंड मुझे जो करना था, दैट वाज माय नेचुरल कॉलिंग इज साइबर सिक्योरिटी। एवरी डे देयर इज अ बैक एंड फोर्थ डिस्कशन विद फादर मदर, ये पुलिस के साथ क्या करेगा, देयर इज नो फ्यूचर, हमेशा अपना डर बना रहता है, ये कहाँ पे होगा, कोई क्रिमिनल इतने सारे ढूंढ रहा है, पेपर में आ रहा है, कोई कोई तुझे कुछ कर देगा कि नहीं कर देगा। मैंने बोला लेट इट बी, गिवन सम टाइम टू इट। द बेस्ट पार्ट इज अभी तो बस ये डिस्कशन चल रहा था, और 26/8/2008, दैट इज 26 जुलाई, उस टाइम पे अहमदाबाद में, राइट, एक साइबर अटैक हुआ। सॉरी, अहमदाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इट्स नॉट अटैक, इट्स अ सीरियल ब्लास्ट। एंड टेररिस्ट हैव put the bombs at around 24 places in Ahmedabad, and 15 मिनट के अंदर, I mean, in Ahmedabad there are more than 200 plus lives are lost, right? इसमें एक साइबर एंगल भी था। We got an email in crime branch, media agencies 15 minutes before, and इसमें लिखा था कि यहाँ पे बॉम्ब्स है, हम ये ऑर्गेनाइजेशन से, हम इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रहे हैं, और आपको जो करना है कर ले। सो देयर इज ओनली वन connect that we have is to trace that email and get hold of the guy. तो हमने मेल ट्रेस किया, बॉम्बे में गए, वहां पे 15 माले की बिल्डिंग थी, ऊपर एक फॉरेनर रहता था, वहां उसके घर पे गए। हमें लगा यार ये फॉरेनर टेररिस्ट कैसे हो सकता है, तो उसको तो घबरा गया, मतलब इतनी सारी पुलिस आ गई, फौज आ गई पूरी। तब पता चला कि उसके यहाँ पे एक राउटर था, और वो राउटर में उस टाइम पे एक प्रोटोकॉल यूज होता था, दैट इज नोन एज WEP प्रोटोकॉल इन दी वाईफाई राउटर, जो इजीली क्रैक हो सकता था। मतलब किसी का भी वाईफाई 5 मिनट में क्रैक हो सकता था। तो जो टेररिस्ट था उसने क्या किया, वो 16 माले पे गया, टेरेस पे गया, उसका वाईफाई हैक किया, मेल करके वो भाग गया। इवन सोसाइटी के सीसीटीवी में भी उसकी फुटेज देखी जा सकती थी, बट भाई साहब ने हेलमेट पहना था, पता नहीं चला कि ये बंदा कौन है। बट दैट वाज अ इंटरेस्टिंग द केस। 3 दिन के बाद एक मेल आता है, उसको हम ट्रेस करते हैं, और वहां पे एक मेडिकल कॉलेज है गुजरात में, वाघोड़िया मेडिकल कॉलेज, वहां पे पहुंचते हैं, राइट। we could not able to find the guy, because जब तक हम मेल ट्रेस करते थे और जब तक हम वहां पे पहुंचते थे, उसको 2-3 घंटे हो जाते थे, राइट। और उसको 2-3 घंटे में तो आराम से भाग जाएगा। थर्ड मेल आता है जिसमें हैदराबाद के बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में लिखा होता है, दैट इज ऑल्सो कम फ्रॉम बॉम्बे। फोर्थ मेल आता है जिसमें दिल्ली के और वाराणसी के बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में लिखा होता है, दैट वाज ऑल्सो फ्रॉम बॉम्बे। सो जब पुलिस के साथ काम करते हो, इतने सारे केसेस सॉल्व किए हो, फिर भी उस टाइम पे क्या होता है ना, यू आर बैक टू जीरो। बोले सनी यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, क्या कर रहे हो, कुछ भी करो, बंदा हमें ढूंढना है। बट आई ऑलवेज वाज मैनिफेस्टिंग के बंदा तो मिलेगा, एंड दिस अचीवमेंट इज ऑन माय नेम, राइट। आज नहीं मिल रहा है, पर कल तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल तो होगा। वेरी आई मीन, जब 4th ईमेल आया तो रात को मेरे दोस्त ने बोला, मैंने बोला यार प्रेशर ये लोग बहुत बढ़ा रहे, पैसे तो मैं तो मदद कर रहा हूँ, इनकी पैसे मिल रहे, और ये लोग मेरे को बोल रहे नहीं नहीं कुछ भी करो, ढूंढो। तो बोला लेट्स डू वन थिंग। मैं बोला मेल आया, बोले मुझे मेल तो पढ़ा। तो आई वाज सिटिंग विद हिम रीडिंग द ईमेल, मुझे पता चला कि भाई ये मेल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, राइट। जैसे आई गिव एन एग्जांपल, आप एक आर्टिकल बना रहे हो जिसमें आपने बीच का पैराग्राफ कहीं से कॉपी किया, और वर्ड में जो आता है, जो आप उसको अलाइन कर देते हो, तो जो आर्टिकल कॉपी किया है ना, उसके फॉन्ट भी अलग रहेंगे, राइट। सेकंड होगा कि उसमें जो स्पेसिंग होगी वो अलग होगी। मैंने कुछ नोटिस किया कि देयर इज समथिंग डिफरेंट इन दिस आर्टिकल। तो मैंने सर्च करना चालू किया विद यूजिंग ओसेंट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, के ये कहाँ पे अवेलेबल है, ये जो पैराग्राफ और जो चीज है, कोई बुक में है, कोई चीज में है, राइट। दूसरा होता है कि जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, अगर मैं ये बात छोड़ के अगर मैं कोई और बातें करने लगूं, तो एक फ्लो मेंटेन समझ में आ जाता है, सेम ऑन दी आर्टिकल, राइट। बरोबर। मुझे पता चला कि दिल्ली में कोई जर्नलिस्ट है, उनकी वेबसाइट से ये कॉपी हुआ है, और ये आर्टिकल आया था वो 13 सितंबर को, दिल्ली में वेबसाइट थी, उस पर 5 सितंबर को अपलोड किया था। अच्छा। तुरंत ही ट्रिगर हुआ कि अगर 5 से 13 के बीच में जितने लोग इनकी वेबसाइट पे आए हैं, उन सबको अगर ट्रेस किया जाए, तो मैंने अपने एसीपी को बोला हम पकड़ सकते। बोले ठीक है, पता कर कि कहाँ से पकड़ सकते। अब सर आपकी यूट्यूब चैनल पे, आपकी वेबसाइट पे हजारों लोग आते हैं, राइट। तो उस टाइम पे इंटरनेट यूजर्स इतने ज्यादा नहीं थे, इतना सोशल मीडिया नहीं था।
600 लोग मिले। अब मुझे बोले सनी 600 लोग के घर पे जाते जाते हमारा 365 दिन हो जाएगा। मैंने बोला नहीं नहीं, आपको वो नहीं करना है। पहला मेल कहाँ से आया? बॉम्बे, किसी का राउटर हैक हुआ। दूसरा मेल वो भी बॉम्बे, सॉरी दूसरा मेल अहमदाबाद से, बड़ौदा से। तीसरा मेल बॉम्बे, चौथा मेल बॉम्बे। मेजोरिटी मेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम समबडीज राउटर विच इज हैक्ड इन बॉम्बे ओनली। महाराष्ट्र के लोग को अलग करो। बहुत सारे और फिल्टर भी अप्लाइड किए, राइट, कि कौन इनकी वेबसाइट पे बार बार पहले भी आया हुआ है, उसको फॉलो कर रहा है, राइट। एंड उसके बाद में देर आर 20-25 आईपी एड्रेसेस वर जीरो डाउन। एंड देन फाइनली फाइन मॉर्निंग अहमदाबाद विद द मुंबई काउंटर पार्ट, वी वेंट टू somebody's place and मॉनिटरिंग चालू हुआ, उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड सब निकाल निकाल के चेक कर रहे थे, हु इज ही टॉकिंग टू, बिकॉज before you go to somebody's place, you need to have some substantial thing with them, right? You'll be surprised. The guy who was arrested is a Yahoo software engineer, and in 2008, his salary was 19 lakh rupees per annum, and that he was earning, and he was actually heading the whole media cell of this Indian gang of Indian Mujahideen. Oh So my God. the interesting, the fact was. That yes, to be very open to you, I've been asked कि सनी इस केस को आप अपने कहीं पे नहीं कहोगे, कहीं पे नहीं। मैंने बोला क्यों? मैंने तो मदद की है, मैंने अपने देश के लिए मदद की है, और ये मदद मेरे लिए नहीं थी। मैंने बोला आपके लिए तो मुझे प्रेशर देना था। मैंने 3-4 महीने से मैं सोया नहीं हूँ प्रॉपरली, एंड बिकॉज we are losing a lot of lives in India, right? There are a lot of people are dead in this terrorist attack, and that was a time, I mean 2008 is still called to be a year where a lot of terrorist attack happened in India. मैंने बोला नहीं नहीं, ये देश के लिए मैं करूंगा, right? No matter whatever you're going to give me, pay me, I'll not accept that. And a very fine morning of waking up, seeing yourself in the very first page of it. But that was a time my family objected. बोले अब तो तू कल से बंद। बोले यार किसके साथ मोड़ ले रहा है, आतंकवादियों के साथ मोड़ ले रहा है, वो तेरा नाम देख रहे। आई स्टार्टेड गेटिंग कपल ऑफ थ्रेड्स एज वेल, पर मेरे पास वो समय नहीं था, क्योंकि ये मेरा केस खत्म हुआ 26/11, तुरंत ही 15 दिन के बाद स्टार्ट हुआ। तो 26/11 में जब ये लोग अटैक कर रहे थे, तो इफ यू सीन अ मूवी, उनको इंडिया में आते आते किसी ने सिम कार्ड दिए थे, राइट, और वो लोगों के पास इंडियन सिम कार्ड्स थे। पाकिस्तान के सिम कार्ड तो चलेंगे नहीं। वो उस सिम कार्ड पे पाकिस्तान से कॉल्स आ रहे थे, बट वो कॉल्स आ रहे थे वीओआईपी से। और वीओआईपी को हमारी इंडिया की कोई भी सिस्टम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, उसको पता नहीं कर सकती कि ये कहां से आ रहे थे। दैट इज बैक इन 2008 आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी वी हैव सिक्योरिटी सिस्टम्स इन प्लेस, और आसानी से ट्रैक हो सकता है, पर 2008 में ये सारी चीजें नहीं थी। पुलिस को याद आया कि यार 2 साल पहले एक बंदा ना टीवी पे कुछ बोलता गया था, वीओआईपी का ऐसा होता है, टेलीकॉम मिनिस्टर को बोलते हैं, ये होता है, आतंकवादी मिसयूज कर सकते, बंदे को बुलाओ, राइट। एंड आई वाज देयर, एंड अगेन द मैनिफेस्टेशन दैट सनी, इस बार तो यू नीड टू ट्रैक इट डाउन इन अ मैटर ऑफ मिनट्स रेदर देन सेकेंड्स। आई ट्रैक दैट गाय, बंदा मिला, मतलब कहाँ से वो सर्वर रजिस्टर हुआ था, किसका क्रेडिट कार्ड यूज हुआ था, किस तरह से हुआ था, एंड दैट वाज अ कनेक्शन एस्टेब्लिश टू द पाकिस्तान आर्मी, जहां से ये सारी एक्टिविटीज, या तो उनके एक्स आर्मी ऑफिशियल्स जिनके क्रेडिट कार्ड का यूज होके ये सारी चीजें की गई थी, करेक्ट। सो दैट वाज अ टाइम, अगेन I got this natural calling, Sunny, now that you have some lifetime achievements with you, I said my dad that look at this, I've done something in this 6 months of the time, allow me to do whatever I want to pursue. There was a resistance. I was given a probation period for an entrepreneurship. It's not a job, but it's my probation period for an entrepreneurship. Okay. दिया जा रहा है 3 महीने का, करो। मैं 3 महीने में क्या करूं? तो मैंने बोला यार पापा, ऑल्दो ही वाज अ बिजनेसमैन, बोले नहीं मैं इन्वेस्टमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे पापा ने मुझे एक भी रुपया नहीं दिया था। तो अब तू बिजनेस कर रहा है, एंड दैट इट्स अ साइबर सिक्योरिटी बिजनेस, इट्स अ डिफरेंट बिजनेस देन व्हाट माय फादर वाज इनटू, तो मैं तुम्हें भी 1 रुपया नहीं दूंगा। मैं बोला 1 रुपया नहीं देगा, कैसे बात कर रहे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये जो केसेस सॉल्व किए थे, प्रेजेंस थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से कॉल आता था, सेमिनार देने आओ, ये देने आओ। अब मैं क्या बताऊं, सेमिनार में मैं 5,000, 10,000, 15,000 चार्ज करूंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माय प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली। बरोबर है। कॉलेज को बोला, खुद की यूनिवर्सिटी को, मुझे एक वर्कशॉप करना है।
कैन यू अलाउ मी टू डू अ वर्कशॉप ऑफ 16 आवर्स? बोले 16 घंटे कौन बैठेगा सनी, राइट? मैंने बोला 8 घंटे एक दिन, 8 घंटे दूसरे दिन, और मैं इतना चार्ज करूंगा। आप में उसमें कुछ शेयरिंग लोगे? नहीं नहीं, अरे यार तू अपना बंदा है, कोई शेयरिंग नहीं। पर सनी, आई हाईली डाउट कि एक बंदे का तुम 1,000-1,200 चार्ज करोगे बैक इन 2008 फॉर 2 days, कोई नहीं आएगा। मैंने बोला अरे सर करिए तो सही। नहीं हुआ, राइट? 7 दिन पहले 25 रजिस्ट्रेशन, 30 रजिस्ट्रेशन। प्रोबेशन पीरियड में 25,000 लेके पापा के पास जाऊं तो बोले कि नहीं नहीं सनी, ये तो बेटर यू डू अ जॉब। बट देन एक ही चीज कहा कि सनी इज गोइंग टू डिस्कस द केस स्टडीज ऑफ दिस टू द केसेस विच आर सॉल्व। आई टुक द परमिशन कि मैं बाकी डिटेल रिवील नहीं करूंगा, बट ओवरऑल हाउ इट हैज बीन डिस्कस्ड एंड हाउ इट हैज बीन 16 hours, आप अपने लैपटॉप लेके आओ, सनी विल टीच यू एथिकल हैकिंग, डिस्कस अबाउट ऑल दिस केसेस। एंड ट्रस्ट में, मेरी कॉलेज ने एक ऑडिटोरियम जिसकी कैपेसिटी 120 थी, उससे 250 पे लेके गए। 250 के बाद सीधा कैपेसिटी 500 पे लेके गए, बिकॉज द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग। पीपल केम फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया for this particular seminar, because Facebook उस टाइम पे आ गया था, uploaded on Facebook, it got viral, and that day I came with 2.5 lakh rupees, because my college people said that we need to give food, give sharing. Initially they're not asking, right? And then उसके बाद में बोला पापा 2.5 लाख रुपए मैं 2 दिन के लेके आया, राइट? अब बताओ, मैं कोई जॉब करूंगा ना पापा, तो मैं साल भर में भी इतना बचा नहीं पाऊंगा। बोले your probation period is successful, now do whatever you want to do and all. And that time I realized that the importance of cybersecurity, or rather awareness about cybersecurity, was very low in India. Right? It was considered to be an optional thing, right? आप किसी की वेबसाइट हैक करो, बोलते अरे यार हमारे पास बैकअप है, हम बैकअप चढ़ा देंगे, हमें सिक्योरिटी नहीं लेना है, राइट? डेटा भले ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट? सो मैंने सोचा कि आई थिंक India needs a right set of awareness. There is a right set of talent which is also, India is needing. So I started as an academician. I started with workshop vertical. 8 घंटे, 16 घंटे, 25 घंटे के हम workshops लेते थे, and we have covered around 700 plus workshops, total 890 workshops, जिसमें 700 workshops मैंने लिए हैं 7 साल के अंदर। Amazing. 50 plus institutions, more than 60,000 people till 2017 trained. And सबसे बड़ा लाइफ का सक्सेस क्या होता है कि कंपनी आगे बढ़ी, कंपनी का आईपीओ आ रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, साइबर सिक्योरिटी बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ेगा। बट बीइंग एन एकेडमिशियन, अभी फिर भी मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेसफुल चीज ये होता है कि कहीं ना कहीं पे कोई एयरपोर्ट पे मिल जाता है, कहीं ना कहीं पे कोई कहीं पे मिल जाता है। व्हेन आई गो टू कॉन्फ्रेंस, आई एनकाउंटर पीपल से दैट आई हैव अटेंडेड योर वर्कशॉप समवेयर बैक इन 2010, राइट? एंड thanks a lot, because that was a trigger point for me to get into a cyber security. So you become I mean, you get that satisfaction because आपने उनके जीवन में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन किया है जिससे उसकी लाइफ बनी, जिससे उसका पूरा करियर बना। एंड दैट इज, आई ऑलवेज कॉल इट माय सक्सेस, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। फाइनली हमने सर्विसेज में डाइवर्सिफाई हुए 2017 में, बिकॉज दैट वाज अ टाइम दैट पीपल हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग फ्रॉम देयर पॉकेट ऑन साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज। वी स्टार्टेड विथ द ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्विसेज व्हिच वी कॉल इट अ VAPT. वी फाइंड आउट प्रॉब्लम्स, we tell them problems, and then finally we help them patch that problem so that no hacker can hack that. We started with 24/7 operations center. Then we started the compliance vertical, because a lot of governance regulations were coming in India. Presence in Ahmedabad, Bombay, Pune, and there are 7 cities right now where you're already having a sales presence, and some of the other remote people who are already sitting right now. Team of more than 200 people right now in the team. We are on an average growing at an average rate of 90 to 100% year on year for last almost 5 years. Lovely. And the same PAT margins, PAT is also increasing. And the best part is I'm still connected to academia, because मैंने वो अभी भी छोड़ा नहीं है. But what we are doing in academia is a full-time programs with universities, and we co-create curriculum, we execute BTech, we execute MTech, and we make sure that we create those right skill talent, not only for my company, but for the complete
Bharat, serving 500 customers. I can only say one thing: when you switch on your light and get the power, we serve them, the major players in the power. You go to a petrol pump and get the petrol filled by some of the major players. We serve them. You eat a pizza, we serve them. You go for a ride in a cab, we serve them, or we secure them, right? ATM providers, we secure them. So I mean, in almost all industries, covered, we are serving around 500 plus customers. And the best part of a company is that we have a 90% renewal rate for all the customers. And that is because of the quality delivery, that is because of the value add what we are doing, and because of the right pricing factor is what we are giving to our customers as well. So that's in a nutshell, Vivek, all about me. Oh, Still a passion, cybersecurity is still a fire in my heart, and I feel that still this sector needs a lot of maturity, because if you look at the market, the segment in the cyberspace, uh, India Indian market is still at a $6.8 billion compared to the global market, which is at 190 billion US dollar right now, which is expected to grow on an average rate of 12% CAGR, and expected to grow at around 400 billion US dollar by 2030 across the globe. And India is coping up a speed to at least get 10% of that market size, is in market size. But the best part is, for last couple of years, because the regulations, the mandates are increasing, people have doubled their spend, tripled their spend in the cybersecurity thing. People are having separate budgets on cybersecurity right now. On an average, organizations are using 10 to 12 different sort of technologies in the cybersecurity. So, I mean, I feel that my future is bright, or the company's future is bright. amazing. Wow, this really deserves a good I'm actually Bollywood. sorry I didn't let you speak as well. That's okay. I mean, you are a born teacher. I mean, you love to talk. That is quite evident, and I can resonate myself with you a lot because पढ़ाना, ये जुनून जो होता है ना, पढ़ाने का और लोगों को समझाने का, सिखाने का, उससे बड़ा कोई जुनून नहीं हो सकता है. तो आई रियली थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू रियली लव. सनी, मुझे एक बात आ रही है माइंड में आपकी जर्नी को लेके कि यार आप तो एकदम सीबीआई ऑफिसर वाला जोन में जा सकते थे. मतलब व्हाई डिड यू चूज business? Is it because of your Gujarati background, or because you could have become an officer, right? Gone into that. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है. आई हैव द इंसिडेंट आई कैन कनेक्ट एज वेल. जब ये अहमदाबाद और ये बॉम्बे ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो ऑफिसर्स जो थे जिनके साथ मैं काम करता था, उन लोगों ने मुझे बहुत फोर्स किया, सनी यूपीएससी दे दे, अगर यूपीएससी नहीं हो रहा है तो जीपीएससी दे दे, अरे हमारे ये कनेक्शन है, अरे मैं साइबर में पोस्टिंग करवा दूंगा, यार तू ऐसा करना, जीपीएससी दे दे एग्जामिनेशन, विच इज अ गुजरात का एग्जामिनेशन एंड ऑल. But as I said, there are two things in the life that I always believe, that either follow the hierarchy or follow other people's opinion that exist, or rather you create your own hierarchy and your own things which doesn't even exist. So I choose the second thing. And the best thing in the life, I always believe, is to do what people say that you can't do. Right? जब मैं डिस्कस करता था कि एसएमएस में ऐसा हो सकता है, माय पेरेंट्स समटाइम्स और माय फ्रेंड्स से दैट ये पागलपंती ना कर, ये नहीं हो सकता. आई डिड इट. पीयूआईपी, यार किसी के नंबर से कॉल करना है, नहीं हो सकता. आई डिड इट. ऑर्कुट में, यार ऑर्कुट का हैकिंग तो करना ही है, राइट? नहीं, आई डिड इट. राइट. उसके बाद में थोड़ा बिलीफ आ गया था, बट व्हेन आई वर्कड ऑन दिस बिग केसेस, इवन ऑफिसर्स वर लाइक, यार छोटे छोटे केसेस तो तूने कर लिए, बड़े बड़े केसेस में ना सनी ढूंढना बहुत ही मुश्किल है. वो इतना प्रेशर देता है कि नहीं नहीं यार, इसको तो करना ही पड़ेगा. एंड आई डिड इट. सो दैट्स द थिंग, राइट? सो आपको वो चीज करनी चाहिए जो लोग बोलते नहीं नहीं ये आप नहीं कर सकते. और एक मैं हमेशा मानता हूं ना कि कई बार इट्स ऑल अबाउट समटाइम्स वी कनेक्ट विद द डेजा. आप कोई चीज के बारे में सोचते हो, चीज आपकी लाइफ में होती है, उस टाइम पे आपको लगता है कि पहले मेरी लाइफ में हो चुका है. सेकेंड टाइम में होता है कि आप उसके बारे में सोचते, आपको इंटरनल बहुत पुश आता है, राइट? तो जब आपको वो चीज पुश आता है ना, दैट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड इन योर लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई अ फर्म बिलीवर इनटू. व्हेन आई गो टू IIMs or give some lectures at other stages as well, I say that you find that push in your life, right? And trust me, when you have that push, or when you are doing what you love to do,
life is a fun. Matlab, I never feel like I'm working. I'm talking to you right now. I need to attend another 2 podcasts, then I need to go to conference, take award also, and then go to a function and have dinner with them, and then come back home at around 12 o'clock also. But trust me, I don't feel like working. I travel a lot, right? But I feel it's a fun, right? So life is a fun for me. Amazing. Late Professor C.K. Praladas once said that an entrepreneur is a modern day freedom fighter, and you have taken the path of becoming an entrepreneur because you want to become that change agent. And I really appreciate your thought process and such wisdoms you have inside you. थोड़ा मैं इंडस्ट्री के बारे में अब और बात करना चाह रहा था. You have already initiated the discussion. तो just to keep things very basic to understand for everyone, जैसे आपने कहा बहुत सारे इंडस्ट्रीज को आप केटर टू करते हैं, जिसमें मैं 3 को पकड़ लेता हूं एक बार: पावर, पिज्जा और पेट्रोल, राइट? तो इन तीनों में आपका क्या रोल है? आप क्या करते हैं इन तीनों के लिए सेपरेटली? So every single thing is now digitalized, right? You're paying the power bills using the applications, correct? Smart meters are connected at home right now. Many cities are right now having smart meters. The power grids are connected. And trust me, everything is connected now. That means gone are the days जहाँ पे पावर ग्रिड्स, जो बड़े बड़े टावर आप देखते हो, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है. So then you are actually mistaken, right? They're all connected to cloud, all connected to internet, because the owner of a respective power company also wanted to know, boss, what is my generation, what is my consumption, what power I'm storing, what power surplus I have. They want everything in a fingertip. And to get that in the fingertip, right, they have this applications, and trust me, when it connected to the internet, it has the vulnerabilities and the hackers will come in. So we secure their applications. We secure power grids, which are not IT network, but I call it a OT network, operational technology network. We secure smart meters. We secure from a reactive to proactive. That means उसको हम पहले प्रॉब्लम ढूंढते हैं, बताते हैं, और उसके बाद में दवाई देते हैं, और वो दवाई का फिर डोज होता है जो आपको पूरे लाइफ टाइम तक चलाना होता है. क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको बुखार हुआ, खांसी हुई, 2 दवा ले लिया, आप हो गए. नहीं, बुखार कभी भी हो सकता है, खांसी कभी भी हो सकती है. देन वी एक्ट एज अ सिक्योरिटी गार्ड, and we monitor those infrastructure on our security operations center so that nobody will come. And our job is, in a layman's language, is to throw the hacker out of the system before he hacks into some critical information of that system. Same goes with the pizza apps, where you order a pizza, right? And everything is connected. So you understand, right? You go to any major pizza OEM, or an OEM, or you can say that the thing, Food it has all the stores connected to it, right? One disruption can halt all that order and deliveries as well. So inventories hoti hai, stocks hota hai, and that all critical information is there. So we basically showcase them what parameters they have, what problems they have in their application infrastructure, secure them and monitor them as well. And the same goes with, I think, what is the third industry you said? पेट्रोल. हाँ, पेट्रोल. बड़ी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. तो बहुत ही आपने देखा होगा, कोई पेट्रोल पंप पे ऊपर एक डिश लगा हुआ होता है. आज के जमाने में सारे पेट्रोल पंप पे है. अब आज के बाद आप देखना. Now that you are saying, I'm just thinking, हाँ, कुछ ऐसा है. So whatever is happening, consumption, the storage and everything, right? All the company pumps are connected over the internet, and then they have those applications, they have those systems where they are actually monitoring the whole supply chain. Oh my God. Right. And trust me, it is well connected at a at a center where they can actually monitor how much is needed in India, how much it is not needed in India. And all this critical data are going from one organization to another organization as well. And that's where security plays a major role, because of one attack on their servers or their systems can halt a complete operations. और ऐसी चीजें नहीं है कि इसमें अटैक अभी तक नहीं हुए हैं, राइट? मुंबई में 2020 hardcore COVID time, a second wave, there was no electricity for 6 hours. And trust me, when the investigation is carried out, although पहले कुछ नहीं आया था, but then everybody has accepted that it was a cyber attack and that has disrupted the grid operations so that
इंडिया में जितनी भी ग्रिड है, जितने भी टावर आप देखते हो, टोरेंट के हो गए, अदानी के हो गए, गवर्नमेंट के हो गए, वो सारे के सारे कनेक्टेड है। यानी एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी बंद हुआ तो दूसरा टावर और दूसरा जो ग्रिड है उसको इलेक्ट्रिसिटी देना चालू कर देगा, राइट? बट द थिंग इज बिकॉज now it is connected and those parameters were changed by the threat actor or a hacker, right? It was down for 6 hours, right? So we are now entering into an era. Don't be surprised कि अगर आपकी मेट्रो रुक गई, it's a cyber attack. आपके घर में पानी आना बंद हो गया, इट्स अ साइबर अटैक, राइट? अगर मानिए कि कोई जियो पॉलिटिकल कंडीशन हो रही है, राइट? सो पीपल आर थिंकिंग दैट वॉट एवर इज static, it can be hacked. No, it is not, right? Drones can be hacked as well. Electric cars can be hacked as well. So everything that you see that gives you a facility, trust me, they have one or the other vulnerabilities, and that's what our job is to find, tell them, patch them, monitor them. सीरियसली मैं ना अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देख रहा हूँ, द जीरो डे। आई डोंट नो वेदर आपने, आई डोंट नो यू सी और नॉट, बट मैं भी कम देखता हूँ, बट समवन टोल्ड मी इट इज एग्जैक्टली विद दिस कि वो फ्यू मिनट्स के लिए दैट होल सिस्टम ऑफ यूएस वाज हैक्ड, दैट लेड टू ट्रेन कोलाइडिंग, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड बिकॉज suddenly the communication convergence was not happening and people died because of that 1 minute of hacking done by someone. तो अब मैं समझ पा रहा हूँ आप जो मुझे बोल रहे हैं ना, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ चीज़ों को कि यस एवरीथिंग इज सो मच कनेक्टेड। तो जब सनी आप बोलते हैं कि यू आर अ डोर कीपर, राइट? अल्टीमेटली प्रोटेक्ट तो टेक्नोलॉजी कर रही है, राइट? चाहे वो एक सिंपल ऑफिस में हम देखते हैं हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहा है, फायरवॉल प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि बाहर का कोई भी बंदा आता है अगर अंदर में हमारे नेटवर्क पे, तो फायरवॉल उसको आइडेंटिफाई करता है और अप्रूव करता है बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल्स वी हैव सेट, राइट? वेयर इज योर रोल? इज अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर ही तो कर रहा है, आप तो खड़े नहीं है फिजिकली। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपने बोला, फायरवॉल प्रोटेक्ट कर रहा है। फायरवॉल किस पे काम करता है? रूल पे काम करता है। हाँ, आपने एक वेंडर से फायरवॉल लिया, वेंडर ने फायरवॉल लगा दिया, वेंडर ने 2-4 रूल कर दिए। ट्रस्ट मी, 100 में से 95% ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन के पास समय नहीं है कि अपनी फायरवॉल में लॉगिन करके देखा। आपने कितनी बार देखा अपनी फायरवॉल में लॉगिन करके? आपको एक ट्रस्ट फैक्टर है, एक चीज है कि साइबर सिक्योरिटी इज इक्वल टू अ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट है मेरे पास, वो मेरे को सिक्योर कर रहा है, अब कुछ नहीं होगा। बट नहीं, एक सिंपल एग्जांपल, people can identify Vivek Bajaj, right? But what if you wear a burqa and go in some area? They won't be able to identify, right? So it's the same thing. The hackers are sending attack in a one particular, pattern. अगर वो फायरवॉल में रूल लगे हैं, वो पैटर्न को डिटेक्ट करेगा, राइट? बट अगर वो पैटर्न को ही चेंज कर दिया, फायरवॉल उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। So what our role comes into a picture is whether this firewall configured properly or not, whether your all devices are having any sort of a vulnerability or not, और vulnerability कभी भी आ सकता है, right? मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जावा करके आपने एक लैंग्वेज सुना होगा, उसमें एक लाइब्रेरी बनी थी ओपन सोर्स, और वो सारे के सारे सिक्योरिटी प्रोडक्ट ने वो लाइब्रेरी यूज करती थी, 20 साल से यूज कर रहे थे, बराबर है, ओपन सोर्स है, राइट? 20 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। 20 साल के बाद किसी ने उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, तो जो सिक्योरिटी प्रोडक्ट है ना, वो भी वनरेबल हो गई। यानी कि कोई आपकी फायरवॉल में, आपके पास आईडी पासवर्ड है, आप तो जा ही सकते हैं, बट कोई भी जा सकता है। सो दैट इज वेयर आवर रोल कम्स इनटू अ पिक्चर, दैट we monitor them, we give them managed services, we adhere to SLAs कि अगर आपके अंदर कोई क्रिटिकल अटैक हुआ तो हम 5 मिनट के अंदर उसको मिटिगेट करेंगे, so that it does not have a catastrophic damage across all your organization and all your locations as well, right? Second, we keep on finding problems, we keep on finding some new problems into it, so that we find the problems before a hacker find a problem in the network and hack them, right? That is the second thing that we do as a security assessment. Third जो हमारा है, that is compliance, because अभी compliance is something which is specifically, I thank to this current government which has been there for 10 years. The compliance is not a sake of compliance. Yep. You can't just give a report and your things are done. Yep. Correct? Yep. Now every compliance frameworks on cybersecurity have got deadlines. Like SEBI has released the framework, given a deadline, बस 31 मार्च तक आपको ये रिपोर्ट देना है, आपको ये हमें ये कंट्रोल मिटिगेट करके देने, देन यू विल बी पैनलाइज्ड फ्रॉम द 1st of April. बरोबर है।
And that is the reason people are, now started following, taking the money out on the cybersecurity spend. And nowadays, people are also realizing that, see, if my website is hacked, if my application is hacked, if my, let's say, a stockbroking app is hacked, it is directly connected to a user trust. और Correct. अगर ट्रस्ट चला गया, सब खत्म. बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. लोग को 2 मिनट लगता है डीमेट अकाउंट खुलाने में, ऑन एनी अदर वेबसाइट. सो यू टू मेंटेन योर कस्टमर. सो इट हैज डायरेक्टली कनेक्शन विद द बिजनेस, राइट? So cybersecurity is not an IT problem anymore. It has become a business problem, and our role comes as an MSSP. So we position ourselves as a managed security service provider. We say that you take a back seat, have a good sleep to the CXOs and CISOs, and we take care of your cybersecurity. I mean, all pillars, in your organization. So we deploy people, we deploy technology, manage technology, utilize those technology, and provide a right set of services, and give a peace of mind to our customer to run a threat-free business. अमेजिंग. और कितने लोग हैं अभी आपकी कंपनी में? So we are already crossed 200 plus, Okay. right? There are full-time people in our organization Okay, currently. As on September, I'm talking about 2025, till March 2025, we were at around 160 people. But we have a lot of people who are working as an intern from our partner universities itself. So there are more than 150 odd people are working from university and from our offices as well. Okay, interesting. I mean, today's world of AI, थोड़ा उस पे समय बिताते हैं कि AI दोनों पर्पस आपके लिए या हमारे लिए करेगा. एक तो वो ऑब्वियसली सिक्योरिटी थ्रेट को भी बढ़ाएगा, बिकॉज एनीथिंग कैन कम फ्रॉम एनीवेयर नाउ, एंड AI probably will have more capabilities to give us more threats. And secondly, you will for sure use AI to provide services to the customers. So do you have any opinion on how things are evolving in the AI space with respect to cybersecurity? Perfect. So the combination of AI and a cyber is a deadly combination right now. Correct? We are solving a lot of problems. So rather, many companies are doing a lot of innovation of AI in cyber security. So the use case of AI in cyber security to automate a lot of functions. So while we are finding a problems, running a scan, it is being done by, it used to be done by a human, but now an AI is triggering a scan and telling us, hey, Sunny, I got the result. Now, what do you want to do with this result, right? The agents are, or the private LLMs, what a couple of them are, we have built, and there are LLMs which are already available, right? It actually says that, hey, this is a risk which is the most important risk for an organization. You better tell your customer this is a first risk that they need to mitigate. Otherwise, AI is now helping to predict based on the historic data as well. Right. So let's take an example. If you run a scan in a company for 4 times, right? It gets the whole historic data of a year, from other vendor if they were associated from the past 2-3 years of the data. And then it says that, I believe that these are the controls which are missing in the organization. Better you should focus on this control. So that's where the AI is actually playing a very, very, very important role in an organization. While we report incidents, we used to investigate, and a lot of analyst time were going in investigation of the incident. कहाँ से हुआ था, कोई IP से हुआ था, एक कंप्यूटर पे हुआ, 10 पे हुआ था, 100 पे हुआ था. What is an impact? What is a risk? Is it first time happening or happened in the past? But those investigation agents or the agentic AI is solving that problem because it says that I feel it's a first time happened. What you need to do is you need to block this things, and this is a roadmap that you need to follow. So with the AI in cybersecurity, organizations, are maturing their security posture as well. And we are also coping up with the speed for creating our proprietary agents, creating our LLM, privatized LLMs through some other vendors also. And there are existing LLMs that we also use to make sure that we automate a function so that we don't, let's say जहाँ पे 5 लोगों की जरूरत है, we will recruit at least 2 people and 3 tasks are done by the AI itself, right? So that's where we are doing things. But yes, this is on the good side of AI. हैकर भी AI का यूज कर रहे हैं. अब वो तो ऑटोमेट करने के लिए उन्होंने कोई कंपनी का वो पूरा लिस्ट डाल देते कि इतने इतने IP एड्रेसेस अवेलेबल है इंटरनेट पे, इसके आप पे इसके अटैक करते जाओ और बताओ
whether this website is vulnerable or not, this is Yeah. vulnerable or not. So I mean, but it's a cat and mouse game. So chalta rahega, right? And then we need to make sure that we find a problem before a hacker finds a problem. So that's Right. the nutshell of that. फेयर पॉइंट. लास्ट सेगमेंट थोड़ा आपके आईपीओ के बारे में बात करते हैं कि आप कुछ अभी मार्केट में पैसे रेज करने आए हैं एंड यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर एक्सपेंशन. तो अभी पहला क्वेश्चन एक इन्वेस्टर के माइंड में आती है हमेशा कि व्हाट कैन गो रॉन्ग. आई वांट टू गेट दैट आंसर फ्रॉम यू फर्स्ट कि व्हाट कैन गो रॉन्ग फॉर इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन योर कंपनी. A very tricky question for me. So first of all, I believe I should tell my age. That actually helps them. Yeah, Right? yeah. 36 completed, 37 running. Oh, lovely. Good age, huh? So I'm still in the mid of my whole life. Yeah. I still have other time to, focus on my passion Yeah. and profession. So coming to, before I answer what can go wrong, I mean, let the user decide what can go wrong, right? I want to discuss the vision is what we are going to create in Ahmedabad from the IPO proceed Yeah. is a fantastic thing. Mm. And this concept, I have taken it, derived it from, when I visited Israel, right? Mm. I've seen that a lot of innovations, a lot of things are happening from the university itself. बंदा पढ़ रहा है, बंदा कुछ बना रहा है, कुछ इनोवेशन कर रहा है, Mm. first year में आ रहा है, get some seed funding and then sell it to Microsoft, Mm. for millions of dollars. Mm. Where I have not seen any single university in India, Mm. although now IIT Kanpur is, keeping a pace into it, or there is one Amrita in the Coimbatore, but I also served a couple of universities, but I was finding a little challenging कि यार वहाँ पे ये नहीं हो रहा है. Second है कि there is not a right R&D center, right experience center which is existing in India. Mm. और एक ऐसा integrated campus नहीं है कि जहाँ पे बंदा पढ़ भी रहा है, पढ़ के साथ काम भी कर रहा है, doing some R&D also, creating some product for us also, and then we are launching some couple of product with that particular person as well, and then he's working for us also during that time. Creating an integrated campus. It's a 66,000 square feet super built up campus is what we are building. Okay. In Ahmedabad, and 84,000 square feet is a land area that we are already having. So it's still 20% is all occupied, in this campus. And this is a vision that I'm actually going ahead with, because there has been no billion-dollar startups or $1 billion companies in the cyberspace have come out from Bharat. There are a lot of reasons to it, right? Can we stop focusing on our West and can we start focusing on our Make in Bharat, product? And can we start or aspiring that we're going to be the one who will actually, say that कि this is a wrong taboo यार. ऐसा नहीं होता है कि आपको यूएस में ही रजिस्टर करना पड़ता है, अपना एचक्यू वहां पे ही करो. While I was getting IPO, you'll be surprised, मुझे बहुत सारे लोगों ने IPO और ये सब बारे में बोला, that Indian P's and the P that you get in the West, they say that why you are doing this, go better register your company in the US, make Indian company a subsidiary and all. But no, things are changing. A lot of big startups are nowadays doing a reverse flip in India and getting IPO in India, right? So, so my vision is that I want to get one of the largest cybersecurity companies from Bharat and from my own Gujarat, where I belong to. Want to serve the community who has given me a lot, in the course of last 36 years of the time. Make sure to create this campus who does a lot of innovation, get a lot of crazy guys, right, who will take this Bharat ahead on this line, and same time my company ahead on the same time as well. What can go wrong, right? See, let me objectify that question. I can understand that. Yeah. By the way, just for my viewers, I must say that this is absolutely impromptu. There was no question sent to him, or we were just doing, as I said, that we wanted to be very casual. So that's why I got him on fix on this question. But let me objectify this question. What can go wrong is predominantly from a business perspective is one, the key man risk, because you are the guy, right? You are the one who has a vision. And
यू आर अ वेरी बाइनरी एंटरप्रेन्योर, यू नो, कि मुझे वो करना है, मैं उसी में काम कर रहा हूँ, राइट? यू डोंट फॉलो दिस सेट प्रोटोकॉल्स. सो वन रिस्क विच द बिजनेस कैरीज इज यू इंडिविजुअल, एंड लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, वी ऑल नो दैट, Correct. राइट? So how you structured the organization to combat Very that risk? Number one. Number two, business concentrated risk जो typically होते हैं ना, कि भाई मेरे बड़े क्लाइंट से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है या इसी ज्योग्राफी से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है. अगर वो है, अभी मुझे नहीं पता, आई हैव नॉट सीन योर नंबर्स येट, बट अगर वो है तो उसको हम कैसे कॉम्बैट कर रहे हैं फ्यूचर में? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो विवेक, आपने दो बहुत ही अच्छे पॉइंट को टच कर दिया, एंड अगर आपने नहीं किया तो मैं भी बोल देता, बट आई थिंक यू ऑब्जेक्टिफाई द क्वेश्चन दैट हेल्प मी टू आंसर अ क्वेश्चन नाउ. Yeah. सो सबसे पहला जो चीज है, कंसंट्रेशन ऑन सर्टन ऑफ द कस्टमर्स, राइट? Yeah. So we have got a lot of enterprise customer who have been with us for last 6, 6, 7, 7 years. And because they have deep pockets in cyber, good budgets in cyber, their, work with us is increasing. And that is what we always feel it a threat as well at a Okay. some, right? Hmm. What we have started doing, post March 2025, right? Because तब तक तो क्या होता था, till you don't file the DRHP and all, right? आप तब तक एक कंपनी की तरह, अरे ये कस्टमर से बहुत ज्यादा धंधा आ रहा है, ले लो ले लो ले लो, राइट? Hmm. And then you file and you see all the parameters of that. You realize that boss is going to be a biggest threat to me if what if the customer goes away. So Yeah. we started our preparations already Okay. by doing an upside and a cross sell to our existing customers. Okay. Invested into a lot of customer gatherings. जो हमने अभी मार्च से लेके सितंबर में we have done a lot, right? Gathering customers in the respective regions. आ जाओ, बैठो, बात करो, आपको हम क्या कर सकते हैं, आपको हम क्या दे सकते हैं, and we started selling a bundle. So the thing is, the ticket size, which was 2 lakh rupees, which is on an average, is now going to increase to around 10 lakh rupees during the course of last 4 or 5 months, Okay. right? Okay. Because that is increased, right? We need to execute the order also to make it realized on our books of account as well. So focus on that particular thing. Educate a customer is what we are doing. अरे कोई कस्टमर नहीं समझता है तो थोड़ा उसको आप खाली प्रपोजल देके छोड़ मत दो. You have to educate them. You have to keep the ball rolling, saying that boss ये करना पड़ेगा, ये ऐसा करना पड़ेगा, because certain organizations still feel that cybersecurity is a cost center. Correct. कॉस्ट सेंटर से उनको आरओआई दिखाना पड़ता है कि बॉस इज एन इन्वेस्टमेंट वेर यू गेट आरओआई. आरओआई नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आपको कोई रिटर्न आएगा, इन टर्म्स ऑफ योर पीस ऑफ माइंड, इन टर्म्स ऑफ योर सेविंग योर जॉब, इन टर्म्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन शेयर वोंट गो डाउन. सो ऑल दिस पैरामीटर्स you have to quantify that and then showcase it to your customer as well. So that's what we started doing, educating our customer, upside cross-side sales to our customers, making sure that a customer give a bundle deal rather than a one-time engagement, converting them into 1 year engagement to a multi-year engagement with the binding contracts as well. So this is what is helping us to make sure that even if our one big customer goes, right, we are not worrying about it, right? Okay. We have customers. Second is focusing on international markets, because the regulations are not just came in India, but it is there across the globe, and those markets where there are right budgets or right ticket size that you have, to make sure to maintain those margins, make sure to maintain those revenue, top line, and grow that top line the same way what you have been doing. Focusing on those markets is the only way out, right? And that's what we started doing already. We started recruiting people. We are going to recruit good number of international sales personals from our IPO proceeds as well. And on a back end, to answer your second question, life is unpredictable. What if something happens to Sunny? What if something happens to this? So to answer this, for me, I create not just employees, or I don't hire only an employees, or rather if I hire them, I make them an entrepreneurs in my organizations, right? And there's a way to make them entrepreneur, right? Tell them the process, tell them what they need to do, don't poke them, give them a freedom in what they want to do, create those topics during my meetings, and I do that where all my employees challenge me. And trust me, when an employee challenges you, right, they come out with lot of ideas. नहीं तो क्या होगा, मैं बोलता रहूंगा, वो बोलेंगे okay sir, हमने कहा यही करना है. But I always create those topics that they challenge me and say that, boss, you're not smart. And trust me, I always behave dumb so that they showcase their smartness, right? And that's how I realized, boss,
my people under me should be more smarter than me, should be more intelligent than me, should be the people who challenge me, not just accept me what I want to do on that, right? And trust me, वो करने के बाद दो फायदा होते हैं. एक तो मेरी स्ट्रेटेजी तो वो मान ही लेते, उनकी स्ट्रेटेजी भी अप्लाई करते, और आके अगर उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी चली तो बोलते देखो सर, मैंने आपको बोला था ना, ऐसे नहीं ऐसे काम होता है, ये टिकट नहीं, इस तरह से इसको क्लोज करेंगे, right? So when I mean, and third thing what we are doing is we are dominating certain of the industries even domestically. So let's say RBI related customers, for them it's a mandate, right? So understand what your competition, your peers are doing and what value add you can give, and it's a price sensitive market. So where you have a competition with big fours or big companies, price is the one point that I'm actually going to play around with. Because you need to understand, I've got a talent generation machine and my talent surplus machine that is always giving me good amount of talent, right? On that. And on the other end, I worked out a lot of associations with OEM for training them, for certifying them. And that's all complementary, which is happening in my organizations. So I believe these three strategies, creating more Sunnies in my organization, more entrepreneurs in my organizations, is what I'm doing. Getting the right leaders is what I'm doing. And we also incentivize people. See, whatever you pay to them, people still leave the job, right? So focusing on two things. One is how can you incentivize? Now, when you incentivize people, right, people are definitely going to not work for you just for the CTC, but they work for the incentive. So मेरे यहाँ पे हमने एक पॉलिसी रखा है, राइट, कि पूरे साल में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है हम उसको एक गाड़ी देंगे, राइट? ओके. और देयर आर n नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड देयर आर एक्सेल शीट बहुत अच्छी बड़ी बनाई हुई है, उसमें आपको हर महीने पता चलता है बॉस मैं कहाँ पे स्टैंड हो रहा हूँ, ये कहाँ पे स्टैंड हो रहा है. तो जो मंथ में आता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ तो होता है, बट हर साल में होता है. तब एक डिपार्टमेंट में एक बंदा ऐसे निकल के आता है, एंड ट्रस्ट मी, इज नॉट अ एक्सपीरियंस और नॉट अ दिस गाय, बट उसका जो एफर्ट जो दिखता है, दैट इज द substantial than anybody in things. And trust me, we give them the chances as well to make sure that they become leader, right, in our organization as well. So give them a chance to do something different and make sure that they don't do one thing but they do multiple things in the organization as well. So second year पे होता है कि यार कार तो मेरे को ले जानी है, ये इस बार ये लेके गया, मेरे को ले जानी है, एंड वो उस टाइम में सेकेंड ईयर अपना कंप्लीट कर लेता है. Now with IPO, we are going to soon have our ESOPs pool, which will be approved by our board members and NSE as well, right? So hoping that it'll be approved, that so that we have the ESOPs to get those people written in our organizations as well. Superb. I sincerely wish that you create more entrepreneur, millionaires, billionaires in your company, because that's what the most highest point for an entrepreneur is, to create more Sunnies for like yourself and grow like you will be growing and helping all the stakeholders to grow with you. Thank you, Sunny. It was really inspiring. Personally, it's a great inspiration which I'm driving from you, because you are a teacher first like me and then you're building something which is so important for the entire society. So more than making profit, I think the value additions which your business is giving to society is incredible. I want to wish you a best of luck for this IPO and your journey from there on, because IPO is just the beginning, isn't it? Absolutely. Vivek, thank you for having me on this podcast and keeping such a good patience, because listening me, even being an academician is also a big challenge. But I see that you're not just a good speaker, but you're a good listener as well. Thanks a lot for that. Thank you. Thank you for your time, and best of luck again. Take care. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.